So hi and welcome to another episode of MBA with Arshi Khan. This is me, Arshi, and today I am with a very important video. I think हमारी जब MBA का हम सोचते हैं अपने करियर में, अपने ग्रेजुएशन में हमने भले कुछ भी किया हो, either it is engineering or BCom or BSc or LLB or anything, right? We always have these dream कि मुझे या तो IIMs चाहिए या फिर अगर IIMs नहीं मिले तो FMS is one of the colleges because जब हम बात ROI की करते हैं तो ये एक ऐसा कॉलेज है जो बहुत सारे बच्चों की लिस्ट में नंबर 1 पोजीशन पे आता है. एंड टुडे आई हैव समबडी विद मी विद द नेम ऑफ आकाश, राइट, जिन्होंने FMS कन्वर्ट किया है इस साल, राइट, CAT 2021 में, राइट. ही स्कोर्ड 99.54 इफ आई एम नॉट रॉन्ग विद द परसेंटाइल. एंड आज आकाश शेयर करेंगे अपने एक्सपीरियंस जो कि आपको हेल्प करने वाला है, you know, that आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं अगर आप CAT 2022 के लिए प्लान कर रहे हैं. एंड ऐसी बहुत सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे इस लाइव सेशन में. सो आकाश, हम लाइव हैं. आई मीन आई थिंक देयर विल बी सो मच. सबसे पहले आई जस्ट वांट यू टू गिव योर इंट्रोडक्शन टू ऑल दी पीपल यू नो हु आर वाचिंग यू राइट नाउ. या So I did my engineering from Punjab Engineering College in 2020. I'm an electronics engineer. After that, I went for UPSC and didn't get through, so I decided to prepare for CAT. So I prepared for CAT through an academy and pretty well did in that. I scored 99.54% percentile in CAT 2021. So I gave interviews for a lot of colleges and eventually convert FMS, which is one of my dream college. So that's all. So my first question, Akash, obviously 99.54 you have got in CAT, right? तो कौन से B स्कूल से आपको कॉल आया था, right? ये भी एक बहुत important question है कि you know ये काफी अच्छा स्कोर है and I think बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए scoring this much is like a dream. Yeah. So I got call from ABC and all ABC Blackie. I got call from all the colleges. So Blackie, CAP, FMS, filled and also. So I got call from all these colleges. So, you know, how was your journey, you know, from completing your engineering to getting into FMS Delhi? How was your journey, right from preparation, right from everything, you know? So everybody just wanted to know. Yeah. So talking about my CAT journey, I decided to write CAT in 2020. From January onward, I decided to go for CAT. So I heard about an academy from my friends. So I took coaching, I took subscription of an academy and prepared from it. So I followed some educators like Ravi sir. I followed him diligently and prepared quant and BILR from him and practiced a lot. So that eventually helped me to go crack CAT. So I prepared from LR. I prepared quant and DILR from Ravi sir and English from VARC from Shabana ma'am. So I think I owe most of my preparation to them. I prepared only from them and not from any other books. Like people usually refer books, but I haven't. एक और बहुत बड़ा पेयर प्रेशर होता है जब हम डिस्कस कर रहे थे इस इंटरव्यू से पहले. वो पेयर प्रेशर ये होता है बिकॉज यू जस्ट राइट आफ्टर योर इंजीनियरिंग यू स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर CAT कि यार मेरे पास तो उतना एक्सपीरियंस नहीं है एंड अगर मैं कर भी लूंगा बिकॉज ऑब्वियसली यू नो इंजीनियर्स के साथ क्या होता है कंपटीशन बहुत ज्यादा हो जाता है. तो मतलब you were scared or you was like चलो देखते हैं how it goes, right? So what was in your mind when you was like preparing for CAT 2021? So when I started preparing, I was only in contact of 2 of my friends. I've been not in contact with many persons. So peer pressure वाला scene नहीं था. And I was always confident कि CAT में अच्छा कर लूँगा. मतलब I have a decent attitude. So coming back from my UPSC journey, so I was confident कि CAT easy होगा मेरे लिए. So that's all. Not that tough. My third question is कि you know आपने बताया कि you know you was following some educators for all your preparation, right? You know, so that's
बट एक और चीज होती है जो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इन योर प्रिपरेशन, दैट इज बेसिकली कि मॉक्स, राइट? हमने बहुत सुना है कि कहीं ना कहीं आपका मॉक्स पे बहुत डिपेंड करता है कि आप कितना अच्छा स्कोर करोगे, बिकॉज यू आर समहाउ एबल टू एनालाइज योर परफॉर्मेंस कि आपने फर्स्ट मॉक पे कैसा परफॉर्म किया, फिर आप और क्या इंप्रूव करना है और क्या इंप्रूव करना है. सो व्हाट डू यू वांट टू से ऑन दैट, जो भी एस्पिरेंट्स कैट 2022 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, कि मॉक्स के लिए क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, कितने मॉक्स हमको आइडियली देने चाहिए, राइट? और हर मॉक के बाद कैसे स्ट्रैटेजाइज करना चाहिए? So for me personally, mocks played a huge role because I decided to give them from July onwards. A lot of people procrastinate, so they eventually decided to give up on mocks. But mocks is a very important part because it eventually prepares you to handle paper in a much more efficient way. So I decided to give it from July onwards, and I gave around I guess 40-45 mocks, which is a huge number. So I can vouch that mocks plays a very huge role in your success. Cat. For some people, they do. So, सो इन दिस आई जस्ट वांट टू ऐड एक और क्वेश्चन है कि कितने आइडियली कितने मॉक्स देने चाहिए अगर कोई कैट 2022 के लिए स्टडी कर रहा है, तो ऑन एन एवरेज हमें हर मंथ में कितने मॉक्स देने चाहिए, या फिर मतलब कोई ऐसा नंबर है, या फिर वो स्टूडेंट टू स्टूडेंट वेरी करता है? vary from student to student and the level of preparation, but honestly you can give one mock per week if you are not that much if you are preparing and have not completed the syllabus. After completion of your syllabus, you can give a mock 2 mocks per week. That is an ideal situation. Okay, so I just want to give you a pause because I think jitne bhi students is video ko live dekh rahe hain, I just want to add one thing. The way Akash said कि preparation एक बहुत important role play करता है, mocks एक बहुत important role करता है, और साथ ही साथ content एक बहुत important role play करता है. तो simple सी चीज है कि अगर हम बात करें तो अन अकेडमी आपके लिए लेकर आया है अन अकेडमी चैंपियंस लीग फॉर कैट 2022, जिसमें यू हैव ऑप्शन कि आपको 100% स्कॉलरशिप और अमेजिंग प्राइजेस हैं. ये 4 दिन की वर्कशॉप रहेगी जो 11th में ऑनवर्ड स्टार्ट हो रही है. इसका टेस्ट जो है वो 15th मई 2022 को है 12:30 बजे. 120 मिनट्स का ये टेस्ट रहेगा. 66 क्वेश्चंस हैं जिसको करने के बाद आपके पास बहुत सारे एक्साइटेड प्राइजेस हैं, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं. और इस टेस्ट के लिए आप एनरोल करने के लिए आपको सिंपली जो कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो आप भी चाहिए एंड अगर आपका भी ड्रीम है दैट यू वांट टू गेट इनटू आईएम्स और एफएमएस और एनी अदर टॉप बी स्कूल्स, राइट, एंड आप कैट 2022 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आपको वेट नहीं करना है और जल्दी से अपनी प्रिपरेशन जो है वो स्टार्ट करनी है विद अन अकेडमी चैंपियंस लीग फॉर कैट 2022. सो दैट वाज अबाउट अन अकेडमी चैंपियंस लीग. अब हम मूव करते हैं और क्वेश्चंस पे कि सिंपल सी चीज आपने बताया कि आपने कितना टाइम दिया, कितने मंथ्स दिए प्रिपरेशन को कैट के लिए? आपने अपनी आइडियली प्रिपरेशन कितने मंथ पहले स्टार्ट कर दी थी? So I decided to go for CAT in January, but started my preparation from March onwards. So from March to November, I'm pretty much serious. But the main phase for preparation came through mocks. When you give a mock, you analyze and you get your mistakes. That is the moment that you came to realize that this section is weak. You have to do more labor in that. So ideally, I guess 6 months is a good time for preparation of CAT. Hello. नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन कि एक ये जर्नी हो गई जहां पे आपने अपना प्रिपरेशन स्टार्ट किया, आपने कैट दे दिया, आपने स्कोर कर लिया, राइट, यू स्कोर्ड 99.54. बट उसके अलावा एक और दूसरी जर्नी होती है जो आपके परसेंटाइल आने के बाद होती है. तो आपके हिसाब से कौन सी जो जर्नी है वो ज्यादा टफ होती है, पहले वाली या बाद वाली? So for me, both are difficult, but for me, the most difficult was after the CAT, when you have to give your interviews. Because for CAT, you know the definite syllabus and the preparation you have to do. But for interview, it's a huge field. And you can be asked questions from diverse topics, from your engineering, from your graduation subjects to GK and current affairs. So for me, that was more difficult. मैं जब इंटरव्यू से पहले हम डिस्कस कर रहे थे, तो यू सेड दिस थिंग कि जहां का इंटरव्यू बहुत अच्छा गया वहां से कन्वर्ट नहीं हुआ, जहां का इंटरव्यू एक्सपेक्टेड नहीं था वहां से कन्वर्ट हो गया.
तो मतलब इतना अनएक्सपेक्टेड होता है when you give interviews of all these colleges like I'm in the Bangalore, Calcutta. So it depends कि आपने कैट में कितना स्कोर किया है, आपकी प्रोफाइल कैसी है, मतलब आपके पास ग्रेड्स कैसे हैं, उसके अलावा आपका वर्क एक्स कैसा है. तो इट डिपेंड्स कि Akash, am I audible? yeah, you are audible now. So I'm saying कि it depends on your profile. If your profile is good enough, if you perform bad in interview, you can get through. It depends college to college. It's a particular scene, not what generalization I cannot say. So what is a good profile according to Akash? So giving the example of A and B, they require a person to have a decent 10th and 12th. Like they want a person to get more than 90 or 85% in 10th and 12th. And graduation also, they required that more than 80% is 80% for a candidate. Ideally, they look for it. Like in FMS also, if you get more than 75%, you get full marks in the component for 10th and 12th marks. So this is something that they require. Apart from that, job work ex plays a huge role. In IMC also, academic diversity play a role. If you are not an engineer, you are definitely at advantage. And gender diversity also. So these all components make up your composite score, and which eventually led to your admission in a B school. I just wanted to know कि जब आपको कॉल आता है तो उसके बाद क्या क्या फेजेस रहते हैं इंटरव्यूज के, राइट? कुछ कॉलेजेस में वैट होता है, उसमें क्या रहता है, इंटरव्यू में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं अगर आप एक फ्रेशर हो, राइट? सो दैट यू नो जो भी स्टूडेंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं उनको ये पता हो कि उनको पैरेलली इसको भी लेके चलना है, इसको भी प्रिपेयर करना है. So I will say that after your CAT, you get your percentile, and after that the colleges calls came pouring in. So colleges की calls में it depends कि from college to college. Like in IIM Bangalore, you have to write an SOP of 600. You have to prepare separately. So it depends college application to application that you have to fill a form, and afterwards your college interview is scheduled. So some colleges like Ahmedabad and Bangalore have bet this, but not all colleges. That might be due to the COVID situation. But this year only 2 colleges have bet. And apart from that, PI is there for all the colleges. So in PI, for freshers, they mostly focus on academics and what you have done in your college time, because you don't have work ex. But for the work people that have work ex around one year or 2 years, they ask mostly from the work ex. And apart from that, it depends from college to college. Like I am Indore, ask a lot of academics from work people also. But it depends from college to college that academics will be asked or not. And what kind of academic questions they usually ask? So like I'm an engineer, they asked me from my CAD subjects that I studied in my college. So it might be 4 years old. You may not remember him, but you have to prepare it for the interview. So that's the procedure. And GK and current affairs also plays a huge role, because during our time that Russia and Ukraine conflict is there. So I was asked question in many interviews from that conflict. Do you have any idea कि like what is the ratio of conversion? Let's say for example अगर एक सीट है IIM अहमदाबाद में, एक सीट FMS दिल्ली में, right? तो उसके लिए कितने students compete कर रहे होते हैं? So ideally the ratio is 1:3 for IIMs. Like for one seat there will be interviewing 3 students, but in FMS it is 1:7. So for 275 seats they have called down 1900 candidates. So the competition is tough more at FMS due to the seats. Yeah, you can say, but a lot of people do leave their FMS seat afterwards. ABC results of ABC came, so it's pretty much good. So it depends. Yeah, so I think I have possibly asked all my questions, right, which is there. I just want to add a few more. I want you to add in the slide कि क्या-क्या और चीजें प्रिपरेशन के टाइम पे या फिर इंटरव्यू के टाइम पे या फिर जब आप प्रिपेयर कर रहे हो तो बहुत सारी ऐसी सिचुएशन आती है जहाँ पे आपको लगता है आपके मार्क्स अच्छे नहीं जा रहे हैं तो आप नहीं कर पाओगे, तो कैसे अपने आप को मोटिवेट रखना है, कैसे अपनी स्ट्रैटेजी बनानी है, टाइम टेबल कैसे बनाना है, कैसे अपने एजुकेशन को भी टाइम देना है जब आप इंजीनियरिंग कर रहे हो और अपनी कैट की टाइम देना है. तो आई जस्ट वांट दैट स्ट्रैटेजी फ्रॉम यू to all the like viewers who are watching and who are preparing for CAT 2022.
So for every individual, this journey is unique. सबकी अपनी अपनी अलग अलग सिचुएशन है, बट एक चीज कॉमन है जो कहना चाहूंगा, practice a lot of DILR sets. It definitely helps you to crack DILR much more efficiently. And apart from that, mocks का बहुत importance है. Mocks पूरे अच्छे से देने चाहिए and analyze करना चाहिए, because a lot of people do give mocks but do not analyze and अपनी mistakes rectify नहीं करते. That will eventually cost them. और उसके अलावा what I want to say मैम कि if you are getting 90% or 91 percentile in mocks, do not get hopeless, because in CAT eventually you can do much better. Because मैम ऐसा होता है कि 90 percentile आते हैं तो you think that I am not performing good, but 90 percentile in mocks is equivalent to around 97, 98, 99 B in CAT. So that I would like to say. And it's unique for everyone कि schedule कैसे बनाना है, but one thing is there, be regular. It's not कि कभी कभी पढ़ लिया या मतलब वीक्स पे ज्यादा पढ़ लिया और वीकडेज पे बिल्कुल ही कम कर रखा है. It's better to be regular in your studies. That will eventually help. So that's all from my side. So thank you so much, Akash. I think I'm all done with my questions, and thank you for your precious time, right, for all the aspirants. And I think this will definitely help them in their preparation. And yeah, all the best. Thank you. Okay. Thank you, ma'am. Okay. This was all about this video. I hope you like it. Do share it with your friends, and for more such video like this, do not